जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना फर्स्ट IRB बनगढ़ से स्वागत। पहली बार हिमाचल प्रदेश पुलिस ने क्रिकेट टूर्नामेंट फर्स्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। 8 दिन चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन जीता कौन हारा ये आपको बताएंगे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हैं। पहली बार ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। जाहिर है पुलिस को क्रिकेट के दौर पे जानने का और खेलने का मौका मिला है। आइए आपको बताते हैं कि इसमें कौन जीता है और किस प्रकार से पूरा जो है ये कार्यक्रम रहा है। तो आपको for having spared his valuable time out of his extremely busy schedule and to have accepted this invitation of ours at such a short notice to grace the occasion as the chief guest of the first HP Police Inter-Battalion Cricket Championship being organized at the Battalion Cricket Ground, Punjab. Honorable Sir, I am joined by my colleagues to thank you from the core of our hearts for this benevolent gesture of yours. Sir, the organization of this momentous event has been envisioned and conceptualized by Shri Vimukht Ranjan, IPS, Commandant of this battalion, who has been passionately, tirelessly and steadfastly working towards the creation of the required infrastructure, without which the conduct of such an event could not have been possible. Honorable Sir, I would be gravely failing in my words if I don't mention the equally resolute response by the force of this battalion to the clarion call of the Commandant by sweating day and night for what we see today as a beautiful, picturesque and lush green battalion cricket ground. Sir, the process of makeover of the existing ground started in December 2021, which included cutting, leveling, removal of pebbles and slope treatment. A total of 242 truckloads of fine quality soil that was specially selected and brought in from different locations of district Una were layered in this ground for the purpose. In April 2022, grass, colloquially known as khabbal, was uprooted from the outskirts of the flood zone of the Bhakra Dam, which was then manually transplanted by the painstaking efforts of the force of this battalion. Day and night watering of grass followed amidst the survival challenge of the hot and sultry conditions of May and June. However, with the onset of the monsoons, the ground turned into an absolutely breathtaking lush green beauty. Sir, this ground has 2 pitches in the middle as well as a practice pitch on the right side of the stage. All the pitches have been specially created by bringing in appropriate soil and other ingredients from elsewhere under the expert guidance and support from the district unit of the Himachal Pradesh Cricket Association. I take this opportunity to thank HPCA for their invaluable contribution towards spreading the technical know-how for the love of the game. Sir, a total of 8 teams took part in this championship, which included 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th IRBNs, 1st HPAP Battalion Junga and PTC Drone. After 4 knockout matches, the first semi-final was played between the teams of 1st IRBN Bangad and PTC Dro on 25th, while the second semi-final was played between 1st HPAP Junga and 2nd IRBN Score. Today, the final match was played between the teams of 1st HPAP Battalion Junga, led by Commandant Shri Sanjeev Gandhi, IPS, and 1st IRBN Bangad, led by Commandant Shri Vimukht Ranjan, IPS. Sir, all the matches have been hotly and fiercely contested between the teams, which has witnessed the highest levels of sportsman spirit as well as the spirit of cooperation and competition, much to the joy and cheer of the spectators. It is hoped that the conduct of this first HP Police Inter-Battalion Cricket Championship shall infuse renewed vigor amongst all our police personnel and shall also be a source of inspiration and encouragement to others. In the end, I would once again like to welcome and extend my profound gratitude to Shri Abhishek Trivedi, IPS, Additional Director General, Armed Police and Training, Himachal Pradesh, for having spared his valuable time to grace this occasion as the chief guest. With that, sir, I seek your permission
for resumption of the match presentation. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, today we have witnessed a very hotly and fiercely contested final match, the way a final ought to be played, and what a treat it was. I think we must clap for both the teams for putting up such a spectacular show which everyone enjoyed. First of all, I would like to call on stage the captain of 1st HPAP Battalion, Junga, to have a word with us, sir. A big round of applause for the captain of 1st HPAP Battalion, Junga. Hard, sir, but you and your boys played exceptionally well, and it was a treat to watch the game of cricket. Thank you for giving us the opportunity. Thank you, first IRBN Bangar. हमने इस खेल को पुलिस का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट, जैसे कि हमने बताया कि पहली बार ये आयोजन हुआ है आईआरबी बनगढ़ में, और तमाम जो पुलिस के खिलाड़ी हैं, जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं, हमने बहुत अच्छी कोशिश की, हमारे लड़कों ने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत बढ़िया से खेलने की कोशिश की। इट वॉज वेरी क्लोजली कंटेस्टेड मैच। थोड़ा प्रैक्टिस का हमको टाइम कम मिला था, लेकिन इवन देन वी प्लेड अप टू द मार्क। हम फाइनल में पहुंचे और हमारे लड़कों में इसमें जो है बहुत जोश था, और मैं ग्रीट करता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ अपने फर्स्ट IRBN की टीम को। इन लड़कों ने बड़ा जोश दिखाया। एक टाइम पे पूरी तरह से हम मैच पे कंट्रोल पे थे जब हमने 5-6 विकेट ले लिए थे, और स्कोर्स 70 या 80 के आसपास था। बट एनीवे, दिस इज ए क्रिकेट, इट इज योर डे। आज फर्स्ट IRBN का दिन था, सो आई टेक इट एज अभी फिर भी खूब विजेता तो हम है ही। तो एनीवे, कांग्रेचुलेशन टू फर्स्ट IRBN। You were almost there for the major portion of the match, sir. और इनिशियली आपका जो बॉलिंग अटैक था, उस बॉलिंग अटैक ने आपने रिस्ट्रिक्ट किया इनको इनिशियल ओवर्स में। कुछ एक अगर वो लास्ट का एक जो है डिस्ट्रॉइंग अटैक जो विनीत ने 32 रन मारे हैं 10 बॉल में, यदि वो ना होता तो आई थिंक इट कुड हैव बीन डिफरेंट। हाँ, ये बिल्कुल और ये दिन की बात है। अब हम लोगों ने अपना जैसे प्लान किया था, जैसे स्ट्रेटेजाइज किया था, उसी के अकॉर्डिंगली हमने खेला। और दिन आज होम टीम का था, होम ग्राउंड का एडवांटेज भी होता है, पर वो भी नहीं है, सब चीज़ें छोड़ दें। बात एक ही है कि फर्स्ट IRBN बनगढ़ बहुत अच्छा क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप उन्होंने दिखाई, और लेवल प्ले यहाँ पे एटमॉस्फेयर रहा। कल सारा बनगढ़ का जितना भी यहाँ पे स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ हमारे फेवर में था। तो आज जो है, आज हमें पता था कि वो चाह तो रहे कि हम जीते हैं, लेकिन एनीवे आप उनकी जो होम टीम है वो अच्छे होस्ट हैं, और वो चाह तो रहे थे कि उनकी गेस्ट टीम जीते, लेकिन एनीवे आज अच्छा टीम है। और हमने भी खूब मौके दिए आपकी टीम को, होम टीम को पूरी लिहाज की आपकी, कि आप लोग जो अपने ग्राउंड पे निराश ना हो। और हम भी खुश हैं कि हम भी इस टूर्नामेंट में शॉर्ट नोटिस में हमने कैरी किए थे, और ये टूर्नामेंट्स का सिलसिला चलता रहेगा, आगे भी खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ADG साहब आज यहाँ पे हम सब लोगों को ग्रीट करने के लिए, और उनके आने से जो है सबका हौसला बढ़ा है। लंबे अंतराल के बाद, जैसे मैंने कहा था कि एक कोविड का बड़ा ड्राई और एक सन्नाटे वाला टाइम हम सभी ने देखा, उसके बाद जो है हम अपने हेमंत कंजल साहब को मैं कल भी ग्रेट करता था, और आज भी मैं यही कहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हमारी हिमाचल पुलिस के लिए एक नई शुरुआत करके दी है। और ये बनगढ़ आने वाले समय पे इंटर बटालियन टूर्नामेंट के लिए
एक ऐसा स्थान बन गया है और बना रहे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। Very well said, sir. And I hope that camaraderie, friendship, as well as a little bit of rivalry amongst the commandants for the team continues. With that, thank you so much, sir. Great round of applause for the captain of Pradesh, Punjab Kesari. I would now like to call on stage the captain of winning team. First of all, many congratulations to you for putting up such a spectacular show. Thank you. Hope everyone enjoyed. Sure. You decided to bat first and your batting blues continued even today. Were you a bit nervous at the time? Not exactly, but yes, everyone gets those goosebumps and butterflies, especially when you're playing in a big match and in the final. I personally also started with cautiously, but then I decided to play the sheet anchor role, but somehow, sometimes the nerves play their role, and we got a little bit of collapse. But still, we managed a pretty decent total on the board. Yes, 170 plus was the total target that you were always looking for, and you reached 170, which I think is a good enough total on this wicket to bat on. But you must have had your heart in your mouth when they just took 5 wickets, 5 very quick wickets. But then some of the partnerships were there which pitched in. And what are your thoughts about your master blaster, Vineet Cham? Yeah, he's a great strength to the team, and I know we bat very down to the 10th batsman. So even if we lose, we get middle order collapse. I was pretty sure that I've got good batters even down the line. Vineet, Mithu, they play pretty well down the line. Then today's surprise revelation was Narendra, the way he hit few very good clean hits. So that added and got us a decent Well, definitely. And your bowlers, not to take anything away from the effort they put in, they were ready to bend the bats and take the hit. And there was some amount of seam movement also in the initial overs. Any special feed that you give them to eat? Well, I've seen all the 8 teams, and I can say that I think we have got the best bowling attack among the 8 teams. And it's not very easy to score 150 plus runs against my bowling attack. So I was pretty sure when we had 170 on the board, because the boys were pretty disciplined, and 3 of them are pretty quick as well. So we were just waiting for the chances. We know that we had contained them well. So we were waiting that they'll go hit. This side, it was a bit difficult, and we lost few chances because of the sun. Otherwise, maybe we would have closed the match much earlier. So yeah, I was pretty sure. When 170 was on the board, I was sure that we're going to win it. But all in all, a good effort, and the boys are also running hard, and even the running between the wickets was very good today. Even the fielding unit, they played as a unit, and it was good to see the boys turn out for the final event. Your thoughts on that? Yeah, exactly. We have been working hard, and I'll not take anything from first HPAP Junga. They played a pretty decent game, as their commandant said. They didn't get much time to practice, and being very honest and candid, my team was playing for quite some time, maybe for a month or 2 months, or maybe 4-5 months here, except for the duties. My battalion knows that we have got a good ground, and we were playing, so that was also a big difference, I believe, in all the teams, that we played well because they have been playing quite regularly. Otherwise, we have got pretty talented players in first HPAP Junga. I've seen pretty good players in PTC Draw team, and the best team in my estimation was 2nd Battalion Junga, 2nd Battalion Sakod. We have got very good players in that, but maybe because someone was not there at the center and help of affairs, or maybe they didn't bother much about their bowling. But my vision basically is, which I want to put to the ADG Lord sir also, that HPC officials are also sitting here, sir, and they have agreed that they will take the 13th team in the inter-district tournaments from HP Police if we are ready to field the team. So I request that
we can have a more competition like this in coming months, involving even the districts, and just select a good team and put in for the inter-district Himachal Pradesh Cricket Championship. That will not only give a good pull to the HPCA for the state team, but will open up very good opportunities for our boys also. And maybe it's just a small beginning, but down the line in 3, 4, 5, 6 years, we see some of our boys playing IPL or even a bigger platform. Nobody knows the way how many of Pioneer have been at the national level. So Himachal these boys are very sincere, dedicated, very hardworking. So I hope that this whatever competition we had it here, the tournament that we organized, the basic idea was just to pick up the talent which is there in SP Police and prepare a team and then put it open in the competition at the state and at the national level. We will see very good players even SP Police. That was the idea with which we played this tournament, sir. And I hope this is supported and we continue with it. And we had a wonderful match, but for HPAP Junga and the kind of fight they put in, sometimes the match was on our side, sometimes the match was on their side. It was like a true final till the 18th over at least the match was on, and it could have gone either way. So that was like a final. Thank you very much and very well played for HPAP Junga. Thank you so much, sir. We can now join back to the team. Thank you. तो ये हिमाचल प्रदेश में जितनी भी बटालियंस हैं उनके बीच में पहला क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें IRB बनगढ़ जो है वो विजेता रहा है। और यहाँ पे अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो चल रहा है बात करेंगे विनिंग टीम के कैप्टन IRB बनगढ़ के कमांडर मुक्त रंजन जी से। सर, आप मैच जीते हैं, किस प्रकार का ये पहला प्रयास रहा और आपने मैच जीता है, किस प्रकार के प्रयास रहे? बेसिकली तो जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने यहाँ तैयार किया है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी हमें और मेहनत का फल मिला के ये हम इंटर बटालियन टूर्नामेंट करा पाए हैं। बहुत अच्छी विकेट हमने तैयार की है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की मदद से, उनके सहयोग से। और हिमाचल पुलिस बहुत उत्साहित है, सभी बटालियंस के प्लेयर्स जो यहाँ खेले बहुत खुश थे कि उनको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्राउंड पर खेलने का मौका मिला। क्या लगता है कि आपको आने वाले समय में ये IPL या इस तरह के खिलाड़ी वहाँ भी दिखेंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम कोशिश करेंगे और डेफिनेटली एक दिन हमारी मेहनत रंग लाएगी और हमारे लड़के जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलेंगे। तो अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है वो चल रहा है। मास्टर अधिराज जी, यहाँ पे रनर टीम रही है और यहाँ पे हमारे कैप्टन है, कमांडर हैं। तो सर, किस प्रकार का मैच रहा और किस प्रकार की संभावनाएं आप क्रिकेट के मामले में जो है वो देखते हैं? हाँ, पुलिस विभाग में हम रोज जो अपना काम करते हैं उससे हटके ये अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारा इंटर बटालियन टूर्नामेंट। इसमें फर्स्ट IRB बनगढ़ ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी यहाँ पे ग्राउंड एज ए होस्ट, और हम लोगों ने भी यहाँ पे जो है खूब एंजॉय किया और भी डिस्प्लेड स्पोर्ट्समैनशिप और इट वाज अ रियली वंडरफुल टाइम। आने वाले समय मुझे लगता है कि ऊना तो वैसे ही स्पोर्ट्समैन के लिए एक अच्छा पॉइंट है, अच्छा सेंटर है, यहाँ क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है। तो हमारी जो बटालियन का जो कंपटीशन है इसमें काफ़ी होप है हमारे लिए आने वाले समय में कि हम लोग जो हैं अच्छे क्रिकेट प्लेयर जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड को दे सकते हैं। जिस प्रकार ऑर्केस्ट्रा के टीम में धूम मचाई है पुलिस ने, उस प्रकार आपको लगता है कि क्रिकेट के मामले में भी? डेफिनेटली हमारे प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड हैं, वो बड़े डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं और साथ साथ में जो है वो अच्छे ग्रूम्ड होते हैं। तो अगर हम लोग क्रिकेट के इस क्षेत्र में जो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारी पुलिस की ड्यूटीज़ के साथ हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे प्लेयर्स जो है इसमें भी ऑर्केस्ट्रा जो हमारी बटालियन का HPAP जुनगा बटालियन का उसी की तरह पूरी हिमाचल पुलिस से जो है वो क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो भी नाम कमा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चल रहा है और मैन ऑफ द मैच जिस प्रकार से ये हुए हैं, क्या बात है।
अगर सिंपल बैच खा के इतने लंबे छक्के मारते हैं तो काबिल तारीफ है। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 10 बॉल में 32 रन, 4 छक्के, और जब आप छक्का बैट घुमाते हैं तो बॉल बाउंड्री के अंदर तो कभी रुकती नहीं है। तो वंडरफुल। और गेंदबाजी भी आपने बेहतरीन की है आज, 3 विकेट भी आपने झटकाए हैं, तो यू आर वेल एंड ट्रूली द मैन ऑफ द मैच। कैसा लगा आज आपको गेंदबाजी? बहुत बढ़िया सर, थोड़ी मार भी पड़ी सर, सब गाली भी दे रहे थे सर। Commandant is always a commandant, whether it is on field or in the office. Anyways, well played, and you surely are the master blaster as well as the person who turns around matches. Thank you. Now, it's time to announce the best bowler of the tournament. No guesses? For his 9 wickets and deadly seam bowling, Shanta Kumar, our first HPP battalion shimla, is the best bowler of the tournament. A big round of applause for him. He is also a very explosive batsman who can hit very towering sixes. Shanta. शांता जी, जैसे मैंने पहले कहा था, पहले हम शांता कुमार किसी और को जानते थे, पर इस टूर्नामेंट के बाद एक नया शांता कुमार उभर के आया है, और आपने बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस जो है इस टूर्नामेंट में की है। ना केवल आपने 9 विकेट झटकाए हैं, बट आपने बल्लेबाजी में भी बड़ा अपना दमखम दिखाया है। तो आपको कैसा लगा ये यहाँ पे आकर खेलना, एंड होप यू एंजॉयड आल्सो? सर खेलने का तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन सर आज थोड़ा सा निराश रहे कि जो हमने कल बैटिंग की थी उसके अगेंस्ट आज हम ओवर नहीं कर पाए। वेल, कांग्रेचुलेशंस। और आपके लिए एक और तोहफा है सेगा कंपनी की तरफ से। मैं आप उस साइड आ जाएं सर, आप उस साइड। मैं पहले दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में श्री हारून राशिद जी, CEO ऑफ सेगा शूज, यहाँ पे मौजूद हैं। ये अपने आप में भी एक खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने एशिया पैसिफिक ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 जो मलेशिया में हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स को काफी प्रोत्साहन करते रहते हैं, और इनकी ओर से जो है इनको आज एक क्रिकेट के शूज और एक ट्रैक सूट जो है वो उपहार के तौर में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। Next, I would like to call on stage the best batsman of the tournament. Any guess? Guesses, please. थोड़ा साफ बोलिए। There are absolutely no doubts about that. The commandant of first IRBN for an aggregate of 106 runs. An outstanding display of phenomenal wicket keeping. He is the best batsman of the tournament.